रियासत तेलंगाना और मरकजी हुकूमत के बीच मसाइल पर आज प्रजा भवन में काफ़ी अहम मीटिंग हुई। 28 उमूर और मसाइल पर तेलंगाना हुकूमत की मीटिंग में हैदराबाद के रुकन पार्लिमान असदुद्दीन ओवैसी भी शरीक रहे। इस इजलास की सदारत डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने की है। इस मीटिंग में तेलंगाना हुकूमत और मरकज़ के दरमियान हल तलब मसाइल पर बहस हुई। बीजेपी और BRS के अरकान ने बज़ाहिर इस मीटिंग का बायकॉट किया। मरकजी वजीर किशन रेड्डी भी गैर हाजिर थे। उन्होंने डिप्टी CM को एक खत लिखा था जिसमें उन्होंने पहले से वादों के मुताबिक हल्का के प्रोग्रामों में लाजमी शिरकत का हवाला दिया। उनकी गैर हाजिरी के बावजूद तेलंगाना हुकूमत ने कलीदी खदशात को दूर करने और मरकज से ज़ेरुल्तवा मंजूरियों पर जोर देने पर मरकूज है। मरकजी फंड्स मुख्तस करने के मामले में तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी को आइंदा पार्लियामेंट इजलास में उजागर करने का इस मौके पर ऐलान किया गया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मरकज़ की जानिब से फंड्स और प्रोजेक्ट्स की तकसीम के मामले में तेलंगाना के साथ मुनसिफाना सलूक नहीं किया जा रहा है। My party stand is that we welcome this today's meeting which has been called by the government of Telangana headed and it was chaired by the Deputy CM. I feel that the government of India is not treating fairly and justly with the people of Telangana. And it is very unfortunate that despite having 8 MPs from BJP and some of them are union ministers, justice is not being done to Telangana in terms of sanctioning of projects. Today, our Deputy Chief Minister of Telangana has invited all the 17 Lok Sabha MPs and the Rajya Sabha MPs from all parties to come and participate in the discussion. The discussion criteria is majorly in the last 10 years what Telangana was supposed to get, haven't got, and the number of representations given by Telangana Chief Minister and the Deputy Chief Minister in the past 15 months during the Congress tenure. So there are so many issues like R, metro rail, we have got issues like radial roads in the city, then we have got issues like Bayaram Steel Factory, Kajipet Rail Factory, Coach Factory, then we also have railway divisions. We have got so many issues related to some Musi regeneration, getting water from the Godavari to the drinking facilities in Hyderabad. There are so many 28 issues have been discussed very keenly and all the input has given to us, and it's a good information for us before going to the parliament session to raise the questions in the house and also to approach the concerned ministers to talk on behalf of Telangana. But the unfortunate thing is we have called all the MPs, but the BRS Rajya Sabha MPs and the BJP Lok Sabha MPs haven't turned up. But definitely this is not on political side, this is on behalf of the state which we need to fight, and it would have been nice that they would have came and we would have understood what exactly it is happening.